सो दिस वन फॉर माई जिम ब्रोज। वीडियो उनके लिए, मेरे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी अभी या तो जिम में नया नया ट्रेनिंग करना शुरू करा है या वो काफ़ी टाइम से जिम में ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो फोकस करते हैं जिम में, दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लिफ्टिंग एज हैवी एज दे कैन टू बिल्ड अ लॉट ऑफ मसल, एंड दैट्स देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द जिम। इसमें कुछ गलत है नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बिल्डिंग मसल। आई थिंक बिल्डिंग मसल इज लिंक्ड विद लॉन्गेविटी, सो आई थिंक यस, अगर आप मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, कीप डूइंग दैट। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं आउटसाइड ऑफ दैट, यू नो, फोकसिंग ऑन अ गुड न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर, स्लीप, staying away from alcohol, drugs, and all these kind of things. Of course, you have to make sure that you're doing all of those things as well. But the idea of this video is why I'm speaking on this topic, because मैं भी अपने majority of fitness career में एक gym bro रह चुका हूँ, and you know, the majority of my lifting career has been spent on trying to go into the gym, lifting as heavy as I can, focusing on building muscle, and not really focusing on other aspects of fitness like you know, functionality, mobility, flexibility, cardiovascular fitness. Because majority of my life being an I would consider myself as a mesomorph. You know, there's ectomorph, mesomorph, endomorph. Ectomorph are the people who are really skinny, fast metabolism, they have a hard time putting on weight and muscle. Mesomorph are the people who they can build muscle, they have moderate sort of metabolism, they can store a bit of fat as well. And whereas the other category, endomorph, are the people who have like broad shoulders, they are tall broad people, but they really store fat easily as well. तो मैं अपने आप को एक मेसोमॉर्फ कंसिडर करता हूँ, और मेरी लाइफ का, मेरी मेजॉरिटी ऑफ माई फिटनेस करियर का एक सबसे बड़ा फियर ये रहता था कि अगर मैं ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर पे, फिटनेस पे, ज़्यादा फंक्शनल फिटनेस पे ध्यान दूंगा तो मेरे मसल गेन्स जिम में बहुत इम्पैक्ट होंगे और नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे. I still have that sort of thought in the back of my mind whenever I'm focusing more on cardio. But again, I'm getting better with it. अब मैं अपने आप को mentally उस चीज़ से इतना ज़्यादा impact नहीं होने देता. तो I'm pretty sure जो कि मेरे भाई होंगे जो शायद अभी जिम में ट्रेन कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट टू कैटेगरीज में फॉलो होते हैं, लाइक इधर एक्टोमॉर्फ्स और मेसोमॉर्फ्स, उनके दिमाग में भी ये चीज़ चलती होगी कि यू नो दे आर ट्राइंग टू negate all those things like cardiovascular fitness, or you know they either are, you know, रियली गुड एट अ स्पोर्ट, वो एक स्पोर्ट प्ले करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो स्पोर्ट खेलने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं वो ज़्यादा खेलूंगा, भागूंगा, दौड़ूंगा तो शायद मेरे मसल गेन्स पे इम्पैक्ट होगा. तो आई थिंक येस, ये चीज़ आपके साथ मेंटली बहुत प्ले कर सकती है, स्पेसिफिकली जब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मसल में, जिम में मसल बिल्ड करना. बट क्या ये सच है? क्या कार्डियो और फंक्शनल फिटनेस क्या बहुत ज़्यादा आपके गेन्स को इम्पैक्ट करती है? आई थिंक it can be true to some extent. Really depends on what type of other fitness you're following. तो अगर आप एक endurance runner हो, for example, if you're someone who's running a lot and you're running for practicing for a marathon and you're doing long distance runs, yes, in these kind of scenarios आपकी muscle building impact हो सकती है. उसका क्या मतलब है? आपकी body catabolic state में जा सकती है, because आप जब उस level की endurance practice कर रहे हो, so what your body is trying to do is your body is trying to survive, right? Your body is trying to eat up all the extra fat and even muscle as well, a bit of muscle as well, to make sure that आप उस endurance based activity में सबसे ज़्यादा अच्छा perform कर पाओ. तो it really depends on what type of other fitness or cardiovascular fitness you're doing. अगर आप एक लाइट कार्डियो एक्टिविटी साथ में कर रहे हो मसल बिल्डिंग की, probably like you're running a couple of times a week, like not long distance running, probably running on a treadmill or going for a 5 kilometer run a couple of times a week. और अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो couple of times a week, like football, cricket, rugby, whatever, I don't think that should hugely impact your muscle building process in the gym. Unless अगर आपकी अदर चीज, जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर वो सफ़र कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल if your nutrition is suffering a lot, if you're not eating enough protein in your diet, if you're not having enough essential amino acids and nutrients in your diet, then yes, that could impact your muscle building process in the gym, because आप अपनी बॉडी को उतना प्रोटीन नहीं दे रहे हो रिकवरी करने के लिए जितना उसको चाहिए. Other thing is, if you're not sleeping really well, अगर आपकी sleep structure messed up है, if you're going to bed and wake up timings are not consistent, then of course that could impact your muscle building and recovery in the gym as well. The conclusion, I don't think some light to medium cardio based fitness or like a functionality sort of fitness आपके muscle building को impact नहीं करेगी, unless you are really slacking off on your diet and sleep and other lifestyle related factors. But yes, if you are doing something that is very high endurance,
based sport, like if you're doing long distance running, if you are doing something of that type, then yes, आपकी muscle building process impact हो सकती है. लेकिन उस केस में भी अगर आप make sure कर रहे हो कि आपका protein intake, आपकी sleep, आपके जो essential supplements हैं वो on point है, then आप वहाँ पे भी muscle loss को या एक catabolic state को avoid कर सकते हो. That's the conclusion of the video. Hope this provides you with some useful information. Let me know in the comment section, guys, if there's any follow-up questions, or अगर आपको लगता है कि आप at the moment किसी confusion में हो in terms of training in the gym or any other things, feel free to put that in the comments box. If you like this, please give us a thumbs up. It really helps with everything, especially just helps me with keep recording these videos and providing you some useful content. Thank you.